guest teacher. Guest teachers would are the guest when they have teachers. been asked to perform their duty. Yes, But the meaning of guest teacher is, first lockdown has been payment so has been during done. lockdown they were not teaching, na? हम तो जो काम कर रहे हैं, अब फर्स्ट लॉकडाउन पेमेंट आप कर रहे हैं, सेकंड लॉकडाउन में नहीं कर रहे हैं, तो केवल 4 मंथ का जो पेमेंट है। पढ़ तो ले इसको, इसका मीनिंग क्या है इसका? नियमित कर्मी हो। एक मिनट आप एक साथ बात कर। मानदेय हुजूर, I don't know what is this new provision. फर्स्ट लॉकडाउन तो पेमेंट हुआ है, सेकंड लॉकडाउन के लिए आदेश है ये आगे। फर्स्ट लॉकडाउन के लिए तो उन्होंने एड ऑफ दे दिया पेमेंट, और सेकंड लॉकडाउन के लिए ये आदेश दिया है। आपसे इसीलिए तो पूछ रहे थे, आगे के लिए मना कर दिया उन्होंने। अप्रैल टू जुलाई में। So what is this? It's a PIL or something of that kind? Read. What is your right? Read. That the salary should be paid to the guest teachers. Yes, guest teacher. Guest teachers would are the guest when they have teachers. been asked to perform their duty. Yes, But the meaning of guest teacher is, first lockdown has been payment so has been during done. lockdown they were not teaching, na? But notification has been done by several notifications by central government as well as state government to pay the remuneration. Where is You our can see in chapter 2, page 14. जो वित्त विभाग का लेटर है चैप्टर 2 पेज 14 में पढ़िए। कह रहे हैं हुजूर कि कोविड के समय में राज्य में हुए लॉकडाउन स्थिति में नियमित कर्मियों, संविदा कर्मियों, बाह्य एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कर्मियों का माह जून 21 से उपस्थिति और वेतनादि मजदूरी भुगतान के संबंध में प्रसंग है हुजूर है इसमें पता जितना कितने। So to come with which category? हम जो डेली वेजेस में हुजूर हैं, नियमित कर्मी हो। डेली एक वेजेस मिनट आप एक साथ बात कर। मानदेय हुजूर, I don't know what is this new provision. ये कर रहे हैं कि संविदा कर्मियों, बाह्य एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कर्मियों का। तो आप किस इसमें हम आते हैं हुजूर, आप किस कैटेगरी में आते हैं? हमको हुजूरी अपॉइंटमेंट हमारा है NH1 से, NH1 से हमारी अपॉइंटमेंट है डन। हम मैं कहने सी NH1 पेज 13। We are asking you something. ये अवधि में नियमित कर्मियों, नियमित हुजूर ने संविदा कर्मी, संविदा भी नहीं वहाँ के माध्यम से इसमें आउटसोर्स एजेंसी, यू कम अंडर आउटसोर्स एजेंसी। गेस्ट टीचर हम हुजूर, हमको गेस्ट टीचर्स कम अंडर द आउटसोर्स एजेंसी, दैट इज योर कंटेंट। यस, आई एम स्टिल वर्किंग। ऑलराइट, आई एम स्टिल वर्किंग। पेज 13 से पेज 13 NH1 देखा जाएगा, पेज 13 देखा जाएगा NH1। शो यस, गेस्ट फैकल्टी टीचर्स आर अंडर आउटसोर्स पर्सन। आई एम स्टिल वर्किंग। That is all right. But no, first lockdown payment was done. Please show that you come under the outsource. But not payment. First lockdown payment was done, but second lockdown, despite of several notification by the central government as well as the state government, second lockdown हुजूर केवल 4 months का हुजूर। First lockdown payment was done. Show that. Yes, ma'am. First lockdown payment हुजूर हुआ है NH2 पेज 14 पर है, फिर NH3 है पेज 14 पर। पेज 14 तो आपने अभी पढ़ा ना? नहीं, पेज 14 NH3 है, पेज 14। ये पेज 16 है, 14 है। इसमें जो 3 है पेज NH7 से भी पेमेंट हो रहा है। NH7 है, लेटर डेटेड 8/6/21। NH7 पेज 21 under the signature of Deputy Secretary Government of India with regard to payment of wages during first lockdown। NH3 भी है, पेज 16 से पेमेंट हो रहा है फर्स्ट लॉकडाउन। Where does it say that guest faculty teachers would be treated as outsourcing person? And where is the actual payment made? Give a proof of anyone who has been paid. तो पेज NH1 देखा जाएगा, इससे मेरा रिक्वायरमेंट हो रहा है। करें
सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी कार्यक्रम पदाधिकारी कोविड-19 के कारण अध्यापन बंद जो अवगत है कि कोविड-19 के राज्य में माध्यमिक अप्रैल 21 से प्रारंभिक शिक्षण संस्थान अध्यापन कार्य बंद है। निम्न संकल्प के समय जारी किए गए अतिथि शिक्षकों की सेवा अध्यापन कार्य हेतु ली जानी है। अतिथि शिक्षकों की सेवा किसी अन्य कार्य में नहीं ली जानी है। हम तो जो काम कर रहे हैं, अब फर्स्ट लॉकडाउन पेमेंट आप कर रहे हैं, सेकंड लॉकडाउन में नहीं कर रहे हैं, तो केवल 4 मंथ का जो पेमेंट है। पढ़ तो ले इसको, इसका मीनिंग क्या है इसका? वाणिज्य तस्वीर में निर्देश दिया जाता है कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापन कार्य प्रारंभ होने की स्थिति में ही अतिथि शिक्षकों की सेवा ली जाए। उक्त निर्देश का आदेश का अनुपालन कराने की जवाबदेही संबंधित जिले के अधिकारी होगी। वित्त विभाग का लेटर है, इसमें लास्ट पेज में हुजूर कह रहे हैं न्यूनतम उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु संबंधित माह जून में लागू होंगे, जून से 3 पे 16 पे हुजूर है, लास्ट में लेटर है हुजूर है, वित्त विभाग का है। लास्ट में हुजूर पढ़ रहे हैं पूर्ण निर्णय लिया जाता है कि राज्य में नियमित कर्मियों संविदा में बाह्य एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कर्मियों के माह 20 के मजदूरी उपस्थिति के संबंध में वित्त विभागीय पत्रांक इतना 18/6/20 द्वारा निर्णय माह जुलाई 20 में लॉकडाउन की अवधि में भी लागू रहेगा। पेज 20 NH 6 इसमें जो फर्स्ट लॉकडाउन पेमेंट हो रहा है, जो वित्त विभाग के पत्रांक 37/22 दिनांक 23/20 द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में संगत विचरण पर विभाग द्वारा राज्य में माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न कोटि के उच्च माध्यमिक विद्यालय में निर्धारित परिश्रम के तौर पर सेवा दे रहे अतिथि शिक्षकों को कोविड-19 के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा घोषित माह जुलाई 20 के लॉकडाउन की अवधि का निर्धारित पारिश्रमिक का भुगतान का निर्णय लिया गया है। आगे क्या लिखा है इसी में? इसी लेटर में लिखा है आगे जी कि अतिथि शिक्षकों को लेना नहीं है आपको, और अगर लिया जाए तो उसी दिनों का तारीख का दिया जाए जिस समय स्कूल खुले, जिस दिनों में स्कूल खुले उस दिनों का अतिथि शिक्षकों को पेमेंट दिया जाए। फर्स्ट लॉकडाउन तो पेमेंट हुआ है, सेकेंड लॉकडाउन के लिए आदेश है ये आगे। फर्स्ट लॉकडाउन के लिए तो उन्होंने एड ऑफ दे दिया पेमेंट, और सेकेंड लॉकडाउन के लिए ये आदेश दिया है आपसे, इसीलिए तो पूछ रहे थे। आगे के लिए मना कर दिया उन्होंने। आप बताइए कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट तो दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है कि देना है, बंद है। हम वो तो आप कर रहे हैं, वो तो आउटसोर्सेज वालों का है। तो जो काम तो हम कर रहे हैं, अभी भी हम काम कर रहे हैं। इन्होंने रिमाइंडर, इन्होंने काउंटर एफिडेविट में माना है जी। क्या कहा है इन्होंने? काउंटर नोटिफिकेशन की बात जिक्र कर रहे हैं, नोटिफिकेशन भी बता रहे हैं कि देना है। कहा है करते हैं ये कह रहे हैं कि 1000 दे रहे हैं 25 दिन का, या अपॉइंटमेंट चले गए हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं देंगे, देखा जाएगा। जवाब जो दिए हैं ये तो आपकी रिप्यूटेशन की मेंटेनेबिलिटी नहीं मान रहे। बाद में तो कह रहे हैं कि उसी लेटर को लगाए हुए हैं। जब हुजूर फर्स्ट लॉकडाउन पेमेंट कर रहे हैं तो सेकंड लॉकडाउन भी देना चाहिए। स्टिल आई एम वर्किंग, ओनली 4 मंथ का है, मई से जुलाई तक का है। और कुछ कहना है? लिखिए। ये आपको क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे थे बताइए। They are the daily basis employee, lordship, not a contractual and not a outsources employee. I have stated in para at page 11 of my counter affidavit, lordship. They may permit to read, lordship. Yes, yes. First logdown में कुछ नहीं है। Why not? The lordship, the finance department sought the opinion from the
from the administrative department, general administrative department, and general administrative department, the given a opinion that your lordship, they are the guest teacher, your lordship. Guest teacher is the daily wager employee and no work and no payment, your lordship. I have stated para 8 का 10वां है जो at page 11 में. All right. देखिए, the petition, this is a writ petition preferred by association saying therein that the guest teachers who were selected and appointed by the respondent state and were prevented to perform their duties during the second lockdown period from April to 11 July 2021 should be paid remuneration in light of the order passed by the Government of India dated 8 June 21. When it comes for the petitioner submits that the state government had taken a decision to release the salary of the guest teachers in the first lockdown on which occurred on account of COVID-19 pandemic. Learned Council submits that similarly for the second lockdown period also the guest teachers should be granted their due remuneration. Per contra, the respondent Director of Education has posed the writ petition and submitted that the writ petition could not be maintainable at the behest of an unrecognized, unregistered association and relies on the judgment passed by the Supreme Court in case of Ayub Khan, Noor Khan, Pathan versus State of Maharashtra. इसका citation निकाल. On merits, Learned Council appearing for the state has submitted that the guest teachers are essentially daily wages and are entitled for remuneration of rupees 1,000 per day for with a maximum of 25 days in a month for the days when they have worked, and as during the outbreak of pandemic COVID-19 second lockdown, the teaching work had been completely suspended. The services of the guest teachers could not be taken and therefore they are not entitled for the remuneration during the period of lockdown. I have considered this submission. While the judgment passed by the apex court makes an observation with regard to non-maintainability of a writ petition at the behest of a
unrecognized association. However, it has proceeded to pass certain orders in the present case. Admittedly, the members of the association are also guest teachers and they are personally aggrieved of the action, and therefore, considering the wide scope available under Article 226 of the Constitution of India, which even provides for allowing a person to take up a redressal of his grievances as against any other person, body or state. In the opinion of this court, the writ petition need not be ousted on the said objection. With regard to the merits of the case, this court finds that the respondents had taken a decision while their order dated 20th July 2020 to release the remuneration to the guest teachers for the month of July, for the lockdown declared in July 2020. Up to July 20, the payment has been released. It appears that for the second lockdown, no orders have been passed by the authorities, and now the respondents have taken a stand that the petitioners are daily wages and they would be paid only if they have performed their duties. This court finds that the guest teachers are those who are selected by a method adopted for selection akin to regular teachers by the department. They are a set of teachers who are asked to perform duties in places where there are vacant posts of teachers. Thus, they perform similar duty to a regularly appointed teacher, and if the school could have been functioning, they would have been asked to perform their duties and would have been paid their remuneration. Thus, it is a case where they have been forcefully deprived on account of COVID pandemic from not performing their duties, which has resulted in denying them their due salary, which may be per day basis. Considering that the respondent had already taken a decision for release of salary for the first lockdown period, no reason is coming forward as to why the petitioners should be denied the same benefit for the second lockdown period too. The decision of the action of the respondents in not releasing the remuneration for the second lockdown period is found to be arbitrary and discriminatory. In view thereof, directions are issued to the respondents to release the payment of remuneration for the second lockdown period too to the guest teachers who were selected and were authorized to perform their duty during the second lockdown period, had the school been functioning at that relevant time. Accordingly, this writ petition is allowed. Action should be taken to release the amount within period of 2 months.